As we were discussed about a promotion, this is a part of a formation of company. So today's topic is preliminary or pre-incorporation contract. The consisting parties are necessary for a binding a contract whereas before its incorporation or non-existent or a non-entity. So of course preliminary contract is that कि आपका जो बिजनेस है आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है देर बिहाइंड द पार्टी टू और मोर पार्टीज जो उसके लिए आपका वर्क कर रही हैं तो उसके लिए पार्टीज दो या दो से ज़्यादा और इट्स इनकॉर्पोरेशन नॉन एग्जिस्टेंस यस ऑफ कोर्स कि लाइक आपका जो इनकॉर्पोरेशन है वो भी नॉन एग्जिस्ट है अभी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है और एक नॉन एंटिटी है अभी उसको एक इंडिविजुअल एंटिटी जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एज एन आर्टिफिशियल पर्सन वो अभी उसको नहीं मिली है. Promoters usually enter into a contract to acquire some property or a right for a company which is yet to be incorporated. Yes. So promoter basically आपके होते हैं यहाँ पे कि to acquire some properties or a right of company which is yet to be incorporated कि आपकी जो कंपनी जब incorporate हो रही है तो related to that वो कुछ आपके property और rights को acquire करते हैं which is such as a contract are called preliminary or a pre-incorporation contracts. तो इस टाइप के contract को हम बोलते हैं preliminary or a pre-incorporation contract जब आपके प्रमोटर्स हैं कुछ राइट्स और प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है. अ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट पर्पट टू बी मेड बाय अ कंपनी विच इज डज नॉट एग्जिस्ट इन अ रियलिटी. यस कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है नॉन एग्जिस्टेंस है. देयर इज़ अ केस इंग्लिश एंड कॉर्नेलिया प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड. A solicitor prepared MOA for association of a company and paid the necessary registration fees and other incidental expense to obtain registration of a company. So there is a case English and a colonial producer company. इसमें केस इज़ दैट कि जो एम ऑफ एसोसिएशन है उसने पे करा कुछ रजिस्ट्रेशन फीस बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और कुछ एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन अ कंपनी रजिस्ट्रेशन. He did this on the institution of a certain purpose who later become the company director. So जिन पर्सन ने ये सब एक्सपेंस पे करे बाद में उस कंपनी के वो डायरेक्टर अपॉइंट हुए he claim his fees and expense on the liquidation of a company. And at the end they were a claim of a fees and expense of a liquidation कि जब कंपनी का लिक्विडेशन उन्होंने अपने जो एक्सपेंस से वो क्लेम करे फीस क्लेम करी. सो हैड द कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू पे सॉलिसिटर इन इज एक्सपेंस एज द कंपनी. सो एट द एंड रिजल्ट ये आया कि आपकी जो कंपनी से आप जो क्लेम कर रहे हो वो आपका वो दे आर नॉट लाइबल टू पे इट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी. तो कंपनी उनको पे नहीं करने वाले बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि वो प्री इनकॉर्पोरेशन है. इट मीन्स अभी वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है. सो बिफोर द इनकॉर्पोरेशन जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी क्योंकि वो कंपनी उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट नहीं थी. बट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कोई भी एक्सपेंस अगर उनके बिहाफ पे होते हैं या वो करते हैं फॉर द कंपनी सो एट द टाइम कंपनी विल बी अ लाइबल. A company cannot buy adoption benefit of a contract purporting to have been made on its behalf before the company come into existence. Yes, a promoter remains liable on a pre-incorporation contract. ये दे इज़ अ प्रमोटर्स आपके लाइबल होंगे प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए. यस क्योंकि आपका जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस बन रहा है तो दे आर इज अ पर्सन हु इज़ अ बिहाइंड दैट ऑफ इन प्रॉस्पेक्टस सो उसके लाइबल होंगे. There is a case a hotel company was about formed and a person responsible for the new company sign an agreement on 27th of January 1866. So एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका 27th of Jan 1866 for the purchase of wine stock. Purchase of wine stock के लिए on the behalf of proposed company payment to be made 28th of January. So आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 27th of Jan और आपकी कंपनी को आपकी जो पेमेंट हुई है that is 28th of Jan 1866. The company was incorporated 20th Feb of 1866. So yes, of course जब से आपका incorporate हुआ है आफ्टर दैट कंपनी लाइबल होगी बिफोर दैट कंपनी आपकी लाइबल नहीं होगी बिकॉज ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंस. In 1963, Specific Relief Act was instituted which gave relief on the promoters and made ratification to pre-incorporation contract. So in 1963 में कुछ आपके ratifications है for the relief of promoters. Say Section 50 subsection H of the Specific Relief Act in 1963 provides that where the promoter of a public company have made the contract before its incorporation for the purpose of company and the contract is warranted by terms of its incorporation may enforce it. So before that आपका जो incorporation आपका जो contract होता है उसे enforce में लाएंगे. Purpose of the company means those contract which are essential for the working of a company.
Next is pre-incorporation and provisional contract, section 11 of the Company Act 2013, which provided that no company having share capital. So there is a case when company having a no share capital would commence any business or exercise any borrowing power till it received its certificate or a commencement of business. So before the incorporation, उसके पास कोई rights नहीं है, कोई भी powers नहीं है, was it deleted by a company, an amendment act. तो ये सब आपके deleted by the company by the amendment. The requirement of filing a declaration before commencement of business for a company having share capital. Next, when a company having a share capital has been reintroduced by a insertion of section 10A. So company insertion हो सकती है by the section 10A of the Company Act 2019, which provide that company having a share capital, whether public or a private, commence any business or exercise any borrowing till the files declaration of the commencement of business. So when the company having a share capital, so they have a right to declare declaration of a commencement of business, and while with the ROC within 180 days of its incorporation. Pre-incorporation contract made by promoter before the incorporation. If they execute a fresh contract after its incorporation, adopt the contract if it is a fails the purpose of section 15 section 15H and section 19E, it is specific relief act. So there is a specific relief act under the section 15H or 19E. Provisional contract is contract which are entered into by a company. इसमें कंपनी एंटर्ड हुई है आफ्टर द ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कंपनी को सर्टिफिकेट मिल चुका है आपके इनकॉर्पोरेशन होने का, बट बिफोर फाइलिंग द डिक्लेरेशन बिफोर कमेंसमेंट द बिजनेस, बट उसका कभी बिजनेस स्टार्टेड नहीं हुआ है एंड नो इज अ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट. तो इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आपके यहाँ इनकॉर्पोरेशन हो चुका है बट आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, इट इज़ अ कॉल्ड अ प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट. द वर्ड प्रोविजन मीन्स नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. द कंपनी इज़ एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस. की अभी कंपनी का स्टार्टेड नहीं हुआ है बट नॉट बाइंडिंग द कंपनी. अभी कंपनी को बाइंड नहीं हुआ है बट कंपनी एंटाइटल्ड टू कमेंस अ बिजनेस. कंपनी हैज़ started or ready to doing a or run a business. So I hope you guys, you all are like this video, and if you have any query you ask in a comment section. So for never miss an update, please hit the bell icon, and in the next class we are discussed about online registration. Bye bye.